Now next chapter is related to the magnetic effect, moving charges and magnetic effect of it. So the first term which you need to know in this chapter is magnetic field. Okay, and it can be experienced in a region in which magnetic influence can be experienced. So if you are near, I mean, how will you know whether there is a magnetic influence or not? So you can have a compass needle's deflection or a magnet in it, so it will deflect, and that is a way you can find out whether there is a magnetic effect or not. But before we define magnetic field, you need to know a formula related to it, which you've done in 10th class, but I don't know you remember it or not. So I'll write it, maybe you know. But in 10th class you did not had learned about the vector form of the formula. So any charge which is moving in a magnetic field, okay, will experience force, and this force is equal to, force is a vector quantity, so this force is equal to q v cross b. Okay, where q is the charge, v is the velocity, and b is the magnetic field. It's a cross product. So it's a cross product, matlab v and b are perpendicular. This force is perpendicular to v as well as b. Okay, v and b, whatever is the direction, f is perpendicular to both of them. Now b is the magnetic field, it's a vector quantity, v is the velocity, q is the charge, f is the force acting on it. So how will you define? If we just have to mention about the magnitude, it is f is equal to q vb sine theta. Okay, now sine theta will be 1 if theta is 90 degree. So if theta is 90 degree, that means charge is moving perpendicular to magnetic field. So how will you define magnetic field? This magnetic field, if this is 1, this is 1, this is 1, then v is equal to f, right? So magnetic field is force. Okay, it is force experienced by 1 coulomb charge moving with 1 meter per second unit velocity perpendicular to magnetic field. Okay, magnetic field is equal to the force experienced by 1 coulomb of charge moving with 1 meter per second or unit velocity perpendicular to the magnetic field. This is how you are going to define magnetic field. And the SI unit of magnetic field is 1 Tesla. Tesla. Okay, short form is capital T. 1 Tesla is, so Tesla is the unit of magnetic field. If you have to define 1 Tesla, then if you have to define 1 Tesla, this will be 1. If this is 1, this is 1, and this is 1, this is 90 degree. So 1 Tesla is when 1 Newton force is experienced by 1 coulomb of charge moving with unit velocity perpendicular to the magnetic field, then the magnetic field is said to be 1 Tesla. Okay, I'm repeating, when 1 Newton force is experienced by 1 coulomb charge moving with unit velocity perpendicular to the magnetic field, then the magnetic field is said to be 1 Tesla. Okay. Then the next topic is Oester's experiment, which you need to know. You can also it's not a practical, like an activity we can do it in the lab. Then here you see symbolically I have drawn, if you have a straight wire, a resistance wire or any wire, direct wire cannot be connected to the cell. You know, a lot of heating effect will be there, short circuit ho jayega. So you can use a rheostat. What will this rheostat do? It will change the current in the circuit, in this wire. Okay, and just below this wire, parallel to the direction of the magnetic needle, compass needle, you keep this wire. Okay, and you know that when there is a compass needle and there is no magnetic field around it, then it always point towards north direction. तो ये north की तरफ, north south direction की तरफ है. इसी compass के just ऊपर parallel wire रख दो, compass के needle के parallel wire रख दो. Okay, so suppose this is north, देखो ये नॉर्थ है, ये साउथ डायरेक्शन है, योर कंपास नीडल विल पॉइंट टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन. ठीक है, जस्ट कंपास नीडल के ऊपर, कंपास नीडल ऐसे दिखता है ना, ऐसे दिखता है, तो ये नॉर्थ है और ये साउथ है, जस्ट इसके ऊपर एक वायर रख दो, करंट कैरिंग वायर. ठीक है, अच्छा, अब तुम की कनेक्ट करोगे, so there will be current passing through it. Okay, now the current's direction, whether it is in this direction or this direction, can be controlled by us. By changing the rheostat position, you can change the amount of current flowing through it. So suppose you choose your current to flow in this direction, is taraf, towards the cap. So it is moving from south to north. So if you have a wire which carries current from south to north, okay, then the deflection will be there. This compass needle will show deflection towards west. Why? There is a rule, snow rule. Okay, snow rule है. अब snow rule के अगर according, if current flows from south to north over a wire, then the deflection will be towards west. So if your current flows from south to north over a wire, then this needle below it will deflect towards west. ठीक है, वो ऐसे
वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा. एंड इफ यू इंक्रीज करंट, मोर अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सो द नीडल विल डिफ्लेक्ट मोर एंड मोर. इफ लेस अमाउंट ऑफ करंट, नीडल विल डिफ्लेक्ट लेस एंड लेस. ठीक है, तो मोर इज द करंट इन द वायर, मोर विल बी डिफ्लेक्शन. देखो यहाँ पे भी वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट किया हुआ दिखाया हुआ है. So if you reverse the direction of the current, then what will happen? If the current goes in this direction, you reverse, so opposite हो जाएगा, ईस्ट की तरफ हो जाएगी ये, है ना, डिफ्लेक्शन, ये इस तरफ आ जाएगा. Now current in wire produce magnetic field direction. So current, any wire which carries current in it will produce magnetic field. क्योंकि compass needle change हो रहा है, deflect हो रहा है, so there is magnetic influence, there is magnetic field. Direction of the magnetic field is given by, or not direction of magnetic field, that this deflection is given by Ampere's swimming rule. Okay, how the needle will deflect, in which direction this compass needle will go, that is given by Ampere's swimming rule, which is snow rule. Current from south to north in a wire over magnetic needle is reflected towards west. That's what I told you, snow rule. A moving charge is okay. Now current, whenever there is a current, there will be magnetic field. But how do you have current? Whenever there is a moving charge, there is current. So basically, a moving charge is a source of magnetic field. Remember, a moving charge is a source of magnetic field. So this was all about Oersted experiment. तो हम ये का छोटा सा कंपास नीडल लेके छोटा सा सर्किट लगा के we can actually see whether that is deflection or not. Okay. Now the next topic is magnetic field, जो मैंने पहले भी बताया, अभी बता रही हूँ. Because magnetic field is a vector quantity, right? So if it is a vector quantity, it will obey superposition principle, है ना? So magnetic field of several sources, a vector sum of magnetic field. Okay, magnetic field of several sources, vector sum of magnetic field of individual sources. That means if you have, suppose you have a wire here, एक वायर यहाँ है, इसमें करंट जा रहा है, एक वायर यहाँ है, इसमें भी करंट जा रहा है, हमें यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, इसकी वजह से देयर विल बी मैग्नेटिक फील्ड, इसकी वजह से भी देयर विल बी मैग्नेटिक फील्ड. तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तुमको वेक्टर सम लेना पड़ेगा दोनों के मैग्नेटिक फील्ड का. All right, got it? Okay. And remember, closer are you to the wire, more will be the strength of the magnet. As you go away from the wire, less will be the magnetic field, right? Acha. Then moving force on a moving charge in magnetic field. So if you have a charge which is moving in magnetic field region, then the force is directly proportional to charge. It is directly proportional to V sin theta, directly proportional to V. In short, when you combine these, you'll get F is equal to Q V cross V. ये जो force मैंने तुमको starting में बताया था, this formula, you know, this formula I explained, defined magnetic. This is known as magnetic Lorentz force. This is magnetic Lorentz force, and this gives the amount of force on a moving charge in magnetic field. Okay, so magnetic Lorentz force, and the direction of this force is given by Fleming's left hand rule. Okay, direction is given by Fleming's left hand rule. So you take your left hand, ठीक है, लेफ्ट हैंड लो, एंड अकॉर्डिंग टू दिस इज फोर, दिस फिंगर इज फोर, इंडेक्स फिंगर, इसको फोर फिंगर भी बोलते हैं. एफ फॉर फोर, एफ फॉर फील्ड. तो दिस इज फॉर फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. दिस इज सेंट्रल फिंगर, मतलब करंट. करंट का मतलब होता है मूविंग पॉजिटिव चार्ज. सो वेर एवर इज अ पॉजिटिव चार्ज मूविंग, ये उसको रिप्रेजेंट करता है. देन दिस थंब, द लेफ्ट आउट थर्ड फिंगर इज थंब. दिस विल गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. सो हाउ विल यू डिफाइन? If the in your left hand, if you keep forefinger, central finger and thumb usually perpendicular to each other, such that forefinger points in the direction of magnetic field, central finger points in the direction of the current, then thumb gives the direction of the force. Okay, इसका example. Okay, if you see this condition, ये मैंने ड्रॉ किया है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ठीक है, डायरेक्शंस के लिए. ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की. अगर मैग्नेटिक फील्ड साउथ टू नॉर्थ की तरफ है एंड अ प्रोटॉन इज entering this region, magnetic field region, perpendicular to the magnetic field, then what will be the force acting on it? There will be a force on it. What will be the direction of the force? Force तो तुमको इस फॉर्मूले से मिल जाएगा, पर उसकी डायरेक्शन कैसे मिलेगी? So you will use Fleming's left hand rule. So according to this फील्ड की डायरेक्शन ऊपर की तरफ, ठीक है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, वो किधर जा रहा है? टुवर्ड्स योर राइट साइड, एंड थंब इज पॉइंटिंग अप. इसका मतलब ये प्रोटॉन के ऊपर जो फोर्स है वो अपर डायरेक्शन में आएगा, वर्टिकली अप, राइट. अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होता, प्रोटॉन की जगह पे अगर हम सपोज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डाल देते, तो अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, सो अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो करंट इस तरफ आएगा, पॉजिटिव चार्ज. तो फिर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कैसे यूज़ करोगे? ये तो इधर ही हो गया, लेकिन तुमको अपना देखो ऐसे करना पड़ेगा हाथ, ठीक है, ऐसे करना पड़ेगा. सो योर thumb is forefinger is in upward direction, but your central finger is in the opposite direction of the electron's motion. और thumb का नीचे की तरफ है, देख लो नीचे की तरफ, you know, like how I'll show you. ओहो, दिखाना भी मुश्किल. हाँ देखो नीचे की तरफ. You will do
thumb is pointing downward, that means the force will act in vertically downward direction. Is it clear? और अगर सपोज चार्ज इसी डायरेक्शन में जा रहा है जिधर मैग्नेटिक फील्ड है, तो वी वेलोसिटी और चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव जो भी हो, अगर सपोज पॉजिटिव है, प्रोटॉन ही है, इधर ही जा रहा है, तो वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, थीटा एंगल बिटवीन देम विल बी जीरो, साइन जीरो इज जीरो, सो ये जीरो हो जाएगा, देयर इज नो फोर्स. इफ चार्ज इज मूविंग इन द सेम डायरेक्शन एज मैग्नेटिक फील्ड, the force magnetic force is zero. If charge is moving perpendicular, then the magnetic force is maximum. If charge is moving at some angle, तो यहाँ पे velocity और magnetic field में कुछ angle theta बनेगा. So you'll just put that theta, you'll get some value. बट मैक्सिमम फोर्स के लिए इट शुड बी परपेंडिकुलर. ऑल राइट, अगर सपोज इलेक्ट्रॉन होता और इधर जाता तो तुम्हारा करंट, तो वेलोसिटी तुम्हें इधर लेना पड़ता. ये अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है, वेलोसिटी नीचे लेना पड़ेगा, तब वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 180 डिग्री है. अगर इन दोनों के बीच में एंगल 180 डिग्री है, साइन 180 डिग्री भी जीरो होता है, तभी भी फोर्स जीरो होगा, है ना. सो इफ चार्ज इज मूविंग इन द पॉजिटिव, चार्ज इज मूविंग इधर या इधर, किधर भी जाए, जीरो या 180 डिग्री एंगल बनाए, तो जो फोर्स होता है वो जीरो होता है. एंड इफ चार्ज इज नॉट मूविंग, चार्ज इज एट रेस्ट, देयर इज मैग्नेटिक फील्ड बट चार्ज इज एट रेस्ट, देन वेलोसिटी इज जीरो, देन ऑल्सो योर फोर्स विल बी जीरो. एंड इफ चार्ज इट सेल्फ इज पार्टिकल इज न्यूट्रल, मतलब न्यूट्रॉन मूव कर रहा है, तो क्यू जीरो हो जाएगा, तभी भी फोर्स जीरो होगा. तब न्यूट्रॉन के केस में दैट मीन्स न्यूट्रल पार्टिकल पे कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं एक्ट करता. नाउ इफ यू हैव बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, force on a moving charge in magnetic and electric field. So see, if you have both the fields, तो तुम्हें पता है चार्ज पे if you have a charge and there is electric field, there will be force QE acting on it. This is electric force. Plus if you have charge moving with velocity v, charge is not at rest, then Q V cross B जो है ये मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स है. ये मैग्नेटिक पार्ट है, ये इलेक्ट्रिक पार्ट है. दोनों का जो वेक्टर सम करते हैं तब हमें जो नेट फोर्स मिलता है, दिस इज लॉरेंस फोर्स. Okay, this is, if question comes right Lorentz force, you will write this expression. If question comes right magnetic Lorentz force, then you write only this part, okay. This is the expression for Lorentz force. Here you can take Q common also, so E plus V cross B is F net, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है.